हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल इग्नू पॉइंट में। आज की वीडियो में हम BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक थोड़ी सी भी स्टडी नहीं करी है वो इस वीडियो की हेल्प से रिव्यू कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कम टाइम में आप अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Why do students lose interest in school work in general? What can the teachers do to help them renew their interest and their studies? All of us must have had the experience ourselves or of those we know well losing interest in studies and wanting to give up and even drop out at some time or the other. Fortunately, these negative moods change after some times in many cases. When these students get back to study, they usually have a large backlog to deal with, or many have lost a year. We need to note the distinctions between this general loss or interest and motivation and negative attitude students sometimes develop to a particular subject or topic or teacher. This will affect learning in that subject, but the students might be doing quite well in other subjects and on the whole be happy at school. The general problem of interest and motivation is not linked to a particular subject or teacher. The negative attitude seems to apply to particularly all schools activity, which can also lead to getting more isolated and unhappy. There are two possible causes of this condition. One of this feeling that everything is too difficult and that three is no real help from teacher or students friends. It could be that the student started the term with many gaps in prior learning readiness but no diagnosis leading to appropriate actions when was taken up. He would have found lesser lessons difficult to follow from the beginning. Sometimes other children may make fun on such students. Unit tests reinforce that fact of being far behind others, and usually no help it helps to improve to provide. All this can lead to feeling unable to do anything successfully and a sense of worthlessness. We will discuss this idea again under self-esteem. Such of confidence often make a child unwilling try to even and interest and motivation and slowly lost. Such occurrences are not that individual teacher's fault. The problem lie in a larger system. The already overburdened teachers cannot provide intensive individual attention to each student. However, teacher can try and adapt the syllabus and material to some extent. The importance point here is that teacher need to convey to weak students that the teachers are aware to student difficulties and try to help them. Encouragement can be shown in small way. The feeling of being carded for matters greatly to such children. Children need to feel that
are welcome in school and class, and also they are respected. The gently pressure they feel should be to try and keep trying, and not necessarily to succeed. Low motivation is nearly always a temporary conditions initially. It can become a more pronounced if there is no support. But helping our students to overcome loss of motivations and interest even in one subject area can have positive effect in other areas as well. As thus we can see the value of creating and maintaining a supportive social climate in the classroom. तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसे वीक होता है, लॉस होता है स्कूल के वर्क में, स्कूल में मन नहीं लगता है, और उसकी धीरे धीरे स्कूल में मन न लगने के कारण उसका स्टडीज़ में भी मन नहीं लगता। वो तो ऐसा होता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है स्टार्टिंग में तो उसे बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे भी वो अपने फ्रेंड्स के अराउंड रहता है, टीचर्स के अराउंड रहता है, तो कुछ बच्चे बहुत ही गॉड गिफ्टेड कैपेबिलिटी के होते हैं एंड कुछ वीक सेक्शन के होते हैं। कुछ बच्चों पे उनके पेरेंट्स भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं और वो कम टाइम में ही जल्दी से सही चीज़ें सीख जाते हैं। और वीक बच्चा जो रहता है वो उसकी कैपेबिलिटीज़ कम होती है और वो कैलिबर उसका कम रहता है, तो उसको एक बार में नहीं समझ में आता है, तो वो दूसरी बार मेहनत करता है, अपने आसपास के फ्रेंड से पूछता है। कोई जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे स्कूल में, पीरियड्स होते हैं, तो किसी बच्चे को इंग्लिश में वीक है, उसको इंग्लिश नहीं बोलना आता है, वो उस क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, ठीक है, बाकी इसके सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं जो कि कम मोटिवेशन और इंटरेस्ट के कारण कम होती जाती हैं। बाकी एक्टिविटीज़ में वो बच्चा पार्ट लेता है, लेकिन वो उसी सब्जेक्ट में वो पार्ट नहीं लेता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, या फिर टीचर्स मुझे डांटेंगी, या फिर मैं अपने ग्रुप में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाऊँगा। इस टाइप से उनको धीरे धीरे वो अपना जो भी सीखने की जो लर्निंग रहती है वो उससे भागने लगते हैं। तो इसमें कुछ हद तक बच्चे की भी अटेंशन कम रहती है, टीचर्स भी इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि एक अच्छा टीचर ही बच्चों को मोटिवेट करता है और उसको लर्निंग में हेल्प करता है। तो इस तरह की चीज़ें इस क्वेश्चन में बताई थी। देन हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंस। Learning styles. Educational psychologists studying the process of learning have found that individuals seems to have different style of learning. These are not linked to higher or lower levels of the capacity to learn. They are rather equally natural and effective ways of engaging cognitively with new experience and ideas. The alternatively style are rather linked, being left-handed to right-handed, but they are not so sharply different or fixed. A student's typical learn styles in class is an orientation or preferences for how information and ideas are taken in a process, but even these styles can and often do changes over time, through only slowly. Also, students can have different styles from different types of subjects matter and curriculum activities. Learning style are too relevant to us because they influence learning.
If there is a match between the teaching styles and student style, learning will be more comfortable and effective. A mismatch could result in this obstacle or effective learning. यहाँ पे लर्निंग स्टाइल को डिफ़ाइन किया गया है एजुकेशन साइकोलॉजी की स्टडिंग के प्रोसेस में ऐसा पाया गया है कि लर्निंग एक इंडिविजुअली लर्निंग है जिसमें इंसान ज़िंदगी भर सीखता है और शायद डेवलपमेंट और ग्रोथ कम हो सकता है, लेकिन लर्निंग वो बाय बर्थ से लेके बाय डेथ तक वो सीखता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। न्यू एक्सपीरियंस को वो प्रीवियस एक्सपीरियंस को लिंक करते जाते हैं, जो कि हम जैसे हम भी हमारे कुछ बहुत लाइफ में जितने सारे एक्सपीरियंस होंगे और उनसे हम सीख के हमारी न्यू एक्सपीरियंस में हम वो गलती नहीं कर सकते हैं। तो हमारे ऐसे ही कहते हैं कि इससे हमें सीखने को मिलता है। तो हमारी न्यू लर्निंग तो होती जाती है, लेकिन हम जो पहले सीखे हुए हैं उसको भी हम उसमें इंक्लूड करते जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्टाइल्स हैं लर्निंग स्टाइल्स के। Several different ways of describing and categorized styles have been proposed by various scholars. Only survey found there were about 70 such models. Obviously, there is a lot of overlap because many different words are used to talk about the same thing. We will look here only at a few interesting style sets of difference that might be relevant when planning for teaching. This overview only previous and general backgrounds. Some of the interesting area in which style difference have been identified are sensory preferences. The word teaching is associated primarily with something the teacher provides or does, usually telling or presenting. Some inputs received thought, the sense, listening, seeing, and feeling. In central of teaching learning experiences, especially in relation to subject matter, is in the syllabus. Remember that the same message can be conveyed or presented in different ways. For instance, when we have to give someone directions for reaching a house from the station or a bus stand, this can be done in different ways using words mainly, or words and gesture, or a diagram map. Similarly, when teaching a lesson, the presentations could use different types of sensory input. One difference among learners is in the way of taking in information, that is, which one suit them best. तो एक सेंसरी प्रेफरेंस में ये बताया गया है कि जो जब भी हम टीचिंग को एसोसिएट करते हैं, किसी भी चीज़ से लिंक करते हैं, तो सबसे पहले टीचर होती है वो एक ऐसा रोल प्ले करती है कि वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो नॉलेजेबल और ऑथेंटिक वे में उसे प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मीनिंगफुल होती है। ओके, और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या तो वो उसको सुन के, देख के, फील करके उसको वो रिसीव करते हैं। ओके, सो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस या तो वो रिलेशन बेस्ड भी हो सकता है
और वो सब्जेक्ट मैटर और उसके सिलेबस से कनेक्टेड भी हो सकता है, और वो वैल्यूबल मॉरल वैल्यू चीज़ से भी कनेक्टेड हो सकता है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम जब भी हम कोई भी अगर आपके घर आ रहा हो तो बस स्टैंड से या फिर कोई भी प्लेस से आप उसको घर आने के लिए कैसे गाइड करोगे, तो बाय यूजिंग ऑफ गेस्चर, बाय यूजिंग ऑफ मैप डायग्राम, और बाय सम वर्ड सम सेंटेंसेस आने के लिए उसको अपना कुछ लोकेशन डायरेक्शंस बताओगे, तब जाके वो आपके घर तक पहुंच पाएगा। तो ऐसे ही टीचिंग करने के लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। आपको लेसन प्लान्स, प्रेजेंटेशन, जो भी आप उनको नॉलेजेबल प्रोवाइड करना चाहते हो उसका वेल मटेरियल, एड्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, क्लासरूम, मेंटेन क्लासरूम, ये सारे चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। The presentation could use different types of sensory inputs. One difference among learners in the way of taking in information, that is, which one suit them best. These are orientations of preferences for the modes of sensory input, the possibility of option, the visual, auditory, tactiles, and kinetics. Visual is based on seeing. Students with this orientation best learning best from written statement on the board or the worksheets and picture diagram model they can see. Auditory is the based of hearing spoken messages like teacher talk seem best for some students to learn. Tacticals related to touch and kinetics, sense of moving body parts of taken together. Some students learn best when they can touch and feel objects, especially models are are themselves moving, as in demonstration or role play. Most teachers, सॉरी पहले हम इसको कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टीचिंग के लिए हमें प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, जो भी हमारे पास मटेरियल्स होता है, बच्चों के लिए वेल मेंटेन्स क्लासरूम, बच्चे भी उसके लिए स्टूडेंट्स भी उतने रिक्वायरमेंट होना चाहिए, रेशियो ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स होना चाहिए, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो उसका मटेरियल एड्स आपके पास पहले से वेल प्लान्ड और वेल प्लान्ड अवेलेबल होना चाहिए। तो कुछ बच्चों को आप जब पढ़ाते हैं तो जो गॉड गिफ्टेड मेंटली पावर से बहुत ही एक बार में समझ जाते हैं, उन बच्चों के लिए तो आप फर्स्ट टाइम समझ जाते हैं। देन जो कुछ बच्चे होते हैं किसी को देख के समझ में आता है, किसी को वो चीज़ टच करके समझ में आएगी, किसी को वो आप डायग्राम के थ्रू अगर आप उसको डिफ़ाइन करते हो उसके थ्रू समझ में आएगा, बाय रिटन वे में उसको समझ में आएगा। कुछ बच्चों को आप एक्शन करके बताओगे, बॉडी पार्ट्स का मूव करके बताओगे, तो कुछ बच्चों को वैसे समझ में आएगा। तो ये सारी टीचिंग मेथड्स होते हैं क्योंकि क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट होते हैं वो सारे यूनिक मेंटलिटी के होते हैं। उनको आप कुछ भी पढ़ा रहे हो तो वो अपने कैपेबिलिटी के थ्रू कैसे अचीव कर पाते हैं, वो ये टीचिंग मेथड के थ्रू ही होता है। Most teachers would say that they use all these methods at different times during their lessons, and they would be right. The point here is the specific way of presenting information can be chosen and used in the more planned manner. After the teachers comes to know about individual students' style, this is especially useful when giving individual attention to students or organizing activity in pair or small groups. Students also differ in the way they engage with our cognitive process. The input they receive. Will now look at these difference in the way children learn. Then whole as part focused learning. तो ये इसका सेकंड पॉइंट है, होल और पार्ट फोकस्ड लर्निंग।
Some learners tend to focus more on general ideas or the big pictures, while others pay much more attention to the small details. This has also been described as the global versus sequential styles of processing information. Some students learn better when the teachers present the discuss general ideas and assign related tasks. They may have a tendency of switched off when a lot of time is spent on small details, but other may respond well to specific and detailed and feel somewhere lost when the focus is an abstract idea. This orientation is related to a broader factors called field dependence, field independence, field dependence. Individuals are influenced by the context. For example, in group where most people favor one opinion in a set of possibilities, they are more likely to agree with others. Those who more field dependence are better able to see basic fact or arguments themselves. This does not mean that they are independent thinker or misfits. Their styles of thinking is more analytical. That is all. क्वेश्चन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इंडक्टिव एंड वर्सेस डिडक्टिव लर्निंग. Inductive learning occurs when a body of specific fact or data is given and effort is directed to finding patterns or inferring a general principles. Tasks involving trying out possible explanation, exploring without knowing beforehand what is the best thing to do. Involve such learning. Grammar is often taught inductively in deductively learning. Usually a rule of principle is given to being with and discussion is one of the implication and application. Many problems in mathematics and science involve sets of deductions. Here too it is found that some students are more comfortable and learn better with the first of these approaches. They seems to enjoy finding the things out of themselves. Learning by discovery. Other students are more comfortable when principles are rulers and stated, and the challenges is to understand and applying them. Personality, dispositions, feeling, emotion, and social interaction. The term personality is a familiar one. When we talk about the describes individual, we always say something about their personality, their typically ways of behaving in their daily lives, and especially when relating to others. This is something in additions to and different from their abilities and skills, achievements, status, and so on. When students write about my favorite teacher, my hero, these personal qualities are emphasized. These are fairly stable qualities and characteristics of the person refers to and traits and can be seen even in children. The study of personality is one of the major subfields of psychology and involves many different theories and models. Several personalities dimensions have been proposed. We will look at
a few of them here to get a sense of what personality factors are. They are interest because they seem to influence learning, but in a different manner than the more cognitive factors just we look. What was the difference between the traditional curriculum and the present day curriculum? What is the learner autonomy? In this section above, we have looked at the sum of the way in which individual differs. The focus has been individual as person who have their own thoughts, feelings, hopes and needs and so on. The focus of being on the psychologist aspects